क्या आपको मुफ्त मिलेगा I-10? If they're giving out for free, I'll get in line, but other than that. अगर I-10 फ्री में मिले तो महाराज भी लाइन में कह रहे हैं कि मैं लूंगा लेने के लिए. But you have to pay your hard-earned money, isn't it? You have to pay cash, hard-earned money. तो आपको बहुत मेहनत का पैसा लगा के खरीदना पड़ेगा I-10. So in this way, we're actually being cheated. We're stuck on this wheel. You know, you have to get more. You have to. You're not happiness. I'll tell this because I'm looking at the time. Do you know? They may not know. There's one of our senior monks. His name is Radhanath Swami. आप में से क्या कोई हमारे एक इस्कॉन के प्रतिष्ठित सन्यासी हैं राधानाथ स्वामी महाराज, क्या जानते हैं उनको आप? He was. Why is he raising his hand? You know Radhanath Swami, very good. He was invited to speak at the London School of Economics to all the bank directors of the Bank of England. London School of Economics, all the generals or managers, bank directors of the Bank of England. तो राधानाथ महाराज को आमंत्रित किया गया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंग्लैंड के सारे प्रतिष्ठित बैंकों के मैनेजर्स को एड्रेस करने के लिए. Now, the way they measure the success of a nation, what's the top nation? Is called GDP, you know, gross domestic product. तो जिस प्रकार किसी देश की आर्थिक संपदा को नापा जाता है, वो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. It means how many things you produce. I think it's 3 years. Durable goods, airplanes, cars, televisions. Hey, enough. Be here with me. Airplanes, televisions, computers. How much stuff we produce. तो जीडीपी का आकलन होता है इससे कि आपने कितना भौतिक पदार्थ समाज जो नाम लिए वो कितना आप उसका उत्पादन करते हैं. And the more the gross domestic product increases, the more successful they say your nation is. और जितना अधिक आप जीडीपी बढ़ाएंगे, ऐसा कहते हैं वो लोग, उतना अधिक समृद्धशाली आपका देश होगा. They have meetings, the big GDP, they all get together. No offense. Our fool President Trump goes, and they this is big GDP, big meeting. G9, G10, G whatever. G20. Huh? तो इस प्रकार बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर यही मुद्दा होता है कि किस प्रकार हम जीडीपी को बढ़ाएं और इसको और विस्तारित करें. But here's an interesting thing. तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज है. A top economist at Harvard. एक बहुत टॉप इकोनॉमिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. Let me say it this way first. You can measure a society in stress, a society that's struggling. You can measure. अगर आपको आकलन करना है इस समाज का जो कि बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान है. Divorce rate, suicide rate, bankruptcy rate, incarceration rate, drug addiction, if I didn't say it. You can measure the stressors or the symptoms of a society that's under stress. तो ये समाज का जो समाज की तनाव से ग्रस्त है उसको आप नाप सकते हैं किस प्रकार कि वहाँ पर कितने तलाक होते हैं, वहाँ पर कितना ड्रग एडिक्शन है, कितने सुसाइड्स हैं, इस तरह से. These are symptoms, measures of an unhealthy society. तो ये लक्षण है एक बीमार समाज के. Lo and behold, it turns out that the societies with the higher GDPs have the highest number of all these things: suicide, incarceration, drug addiction. Even though they're advertised as the most successful, highest GDP, they have the most stressed societies. तो हम देखते हैं कि जो सबसे समृद्धशाली देश माने जाते हैं संसार के, जिनका कि बहुत अधिक जीडीपी है, वहां पर इन सारे जो लक्षणों की मात्रा सबसे अधिक है. I'll give you another shocking figure. आपको एक और बहुत हैरान करने वाली तथ्य बताएंगे. All over the world, I just came from Burma. You know, Burma's coming out from under the cloud of a horrible dictatorship. तो मैं अभी बर्मा से आया हूँ और जानते हैं बर्मा अभी फिलहाल ही बहुत भयावह डिक्टेटरशिप से बाहर आया है. And there it's advertised, it's being advertised to them, oh, you have to consume more, buy more, you have to get with the program. तो वहाँ पर इस तरह से बहुत प्रलोभन दिए जा रहे लोगों को कि आपको और अधिक उपभोग करना है, आपको और अधिक खर्चा करना है. So Radhanath Maharaj said, you don't measure a society by GDP, gross domestic product.
You need to measure society by GDH, gross domestic happiness. तो राधानाथ महाराज ने कहा कि आप एक समाज को आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नापने के बजाय ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस से नापना चाहिए. Is the society actually healthy? Is your society, again, what is the divorce rate? What is the, disease rate? What do you have to add up all these things? तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी समाज में कितने तलाक हो रहे हैं, कितने लोग ड्रग एडिक्शन में हैं, कितने लोग आप नशे के लत से जूझ रहे हैं. What I was going to say about the interesting fact, and again, it's a lie meant to cheat you. It is a lie meant to get you on that conveyor belt and give your heart and soul to the machine that grinds up everything, the consumer consumption machine. And this is a lie they tell to get you on that thing. तो आपको इस तरह के असत्य बताए जाते हैं, इस तरह के झूठ बताए जाते हैं जिससे कि आप उस कन्वेयर बेल्ट पर आ जाएं जो कि कंजम्पशन को बढ़ाने, कंजम्पशन की तरफ ले आती है आपको. They say, oh my dear nation, you want to come up to the American standard of consumption, American standard of enjoyment. अगर आपको आना है उस स्तर पर जहाँ पर कि अमेरिका के लोग हैं भौतिक सुख सुविधाओं के में. Actually, America's on its way down, India's on its way up. I've been coming to India since 1973. So India's on its way up, America's on its way down. तो मैं 1973 से भारत आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि भारत अभी ऊपर जा रहा है और अमेरिका नीचे आ रहा है सब भौतिक समृद्धता में. But they're telling the people in Burma, you have to get a brand new washing machine, you have to get a bigger car, you have to get a bigger house. You don't have a big screen TV? Oh, you're never going to be happy. Get a big screen TV. तो बर्मा में इस तरह का प्रचार, Get an iPhone 10. इस तरह का प्रचार चल रहा है कि आपको बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा टीवी चाहिए, iPhone 10 चाहिए. But here's the math. No magical thinking, no blind faith. Let's just talk the numbers for a second. तो हम अभी आंकड़ों पर नजर डालते हैं एक कुछ क्षणों के लिए. I forgot what the exact number is, but it's something like this. If you take the top Western nations and you throw in Australia, you say UK, Germany, America, Canada, whatever, you throw them all in, and you take the population level, and you take the amount of raw resources that population consumes. अगर आप विश्व के सबसे समृद्धशाली देश ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस इनको आप मिलाएं और आप इनकी पॉपुलेशन को ऐड अप करें और उनके जो रिसोर्सेज हैं जो उनके पास है उनका आप अगर संकलन करें, it works out something like this. You've got, let's say, 8% of the population, but they're consuming 16% of the resources. 8% population, 16% resources. तो इस प्रकार के आंकड़े सामने आते हैं कि इन देशों की जो जनसंख्या है वो 8% है विश्व की, परंतु ये 16% विश्व के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं. So what is the consumption level if you bring 100% of the Earth's population up to that level of consumption? What happens? Do you have the raw resources to provide that? तो अगर आप पूरे विश्व की जनसंख्या को उसी स्तर पर ले आए भौतिक सुख सुविधाओं की जो कि इन देशों की है, तो क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि उस जनसंख्या को वो पूरा कर पाएंगे? Turns out, can you just stop? हरे कृष्णा प्रभु. Just stop.